ये पार्ट टू पार्ट वन 156 क्वेश्चन से हम ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, तो 157 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। Chondrocthes and osteocthes are classes in which fins are present for locomotion. They belong to the group what? The चारों ऑप्शन reptiles, tetrapoda, amphibia and pisces. So the answer is pisces. Okay. And which of the following statement regarding human reproduction are incorrect? Option number A. The placenta develops within the ovarian cavity. The placenta is present between the umbilical cord and the embryo. Relaxin is an exclusive secretion of the placenta. And D. Placenta is formed due to interdigitation of chorionic villi and myometrial tissue. पूछा है क्या? which are incorrect about human reproduction. Okay, so तो चारों ही गलत लग रहे हैं मुझे। प्लासेंटा डेवलप्स विद इन द ओवेरियन कैविटी तो गलत है। जब प्लासेंटा इज प्रेजेंट बिटवीन द umbilical cord एंड द एम्ब्रियो, ये भी गलत है। एंड द रिलैक्सिन इज एक्सक्लूसिवली सिक्रेशन ऑफ द प्लासेंटा, ये भी गलत है। प्लासेंटा इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरडिजिटेशन ऑफ, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑल आर इनकरेक्ट। ओके, आइडेंटिफाई द इन्वर्टिब्रेट। इन चारों में से इन्वर्टिब्रेट कौन है? फिशेस, इंसेक्ट, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ इंसेक्ट। दीज आर इन्वर्टिब्रेट्स। ओके, so then 160 number question, which of the following is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? देखो, लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड, यूरिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स, फेलाइन न्यूट्राइल अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल डाइसैकेराइड। इन चारों में से which is not correctly matched? ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ग्लिसरॉल डाइसैकेराइड, ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। देन 161 नंबर क्वेश्चन, osmolarity of the glomerular filtrate can be 1200 meter osmol per liter in which of the following part? कौन से पार्ट में होता है? तो हेयर पिन बैंड ऑफ हेनलेस लूप इन इनर मेडुला। ठीक है, ओके। 162, which part of the pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus? कौन सा जो को मतलब पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट जो न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट पे रहता है, डायरेक्ट टच पे रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ न्यूरोफाइफोफाइसिस। न्यूरोफाइफोफाइसिस इज़ द राइट आंसर। ओके, 163, इलेक्ट्रॉन होल इज फॉर्म्ड इन which क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखो, तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन दिए गए हैं आपके क्लोरोफिल A675, क्लोरोफिल A685 3680 एंड क्लोरोफिल A673, क्लोरोफिल A703। तो आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल A683, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली P60 P680। ओके, in leucoplast of the plant cell, एलायोप्लास्ट स्टोर व्हाट? एलायो तो तीन होते हैं ना, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट में एलायोप्लास्ट क्या स्टोर करके रखता है? तो ऑयल एंड फैट्स इज द राइट आंसर। इन which ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कैन एंटीजन बाइंड? प्लेस 1 2 1 2 या प्लेस 1 2 3 तीनों जगह पर, प्लेस 1 एंड 3 एंड प्लेस 2 एंड 3। ओके, सो आंसर क्या होगा? प्लेस 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ओके, 166, organism having dorsoventrally flattened body and known as flatworms are classified under the phylum of what?
Annelida, mollusca, platyhelminthes, porifera, dorso-ventrally flattened body unknown. Here platyhelminthes is the right answer. No? Okay, 167. Match the terms in column 1 with their description in column 2. Uremia is deals with accumulation of urea in blood. Yes, I think this is correct. A uremia is belongs to 3, that is accumulation of urea in blood. Then glomerulonephritis is belongs to inflammation of glomeruli, and renal calculi is belongs to insoluble mass of crystallized salt in kidney. Then glycosuria is belongs to diabetes mellitus. Okay, so option number D will be correct answer. Okay, so 168. Mendel proposed 4 postulates, where postulates 4 refer to watch purity of gamete, principle of independent assortment of factor, dominant unit factor, या principle of segregation. So the option number B is correct because principle of independent assortment is the postulate 4. Okay, so what principle of independent assortment? Which of the following bacteria is capable of producing DNA polymerase? Thermus aquaticus, Escherichia coli, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens. Option number A is correct. Simple. Sella turcica is the depression in the sphenoid bond. And which lodge? Pituitary gland, thyroid, pineal gland, thymus. So option number A is correct, that is pituitary gland. Second messenger generates a response to all except what? Cortisol. Okay, second messenger generate response to all except the cortisol. And Gentia Hills in Meghalaya is an example of what? Biosphere reserve, a wildlife safari park, a zoological park, a sacred groves. So option number D is correct because this is sacred groves. Jointia Hills. Okay. What is the major RBC producing organ in our body? Tonsil, thymus, bone marrow, spleen. Okay, that is simple. Bone marrow is the right answer. Which genetic disorder result in mental retardation and is inherited as an autosomal recessive trait? Okay, options are given: phenylketonuria, sickle cell anemia, Klinefelter syndrome, and last of all, Down syndrome. So option number A is correct, phenylketonuria. The primary acceptor molecule ribulose 5 base phosphate, that is RUBP, of Ca2 fixation cycle was found by which scientist? Okay, Andrew Benson, C.R. Slack, Dicker, M.D. Hatch. So okay, so option number A is correct, that is Andrew Benson. That's it. So we discussed 23 questions from 157 question to 175 question. So it is the second part of 2023 OUAT previous year paper, a biology category. So in the next part we will discuss the third part of it, that is 176 question to 200 questions. Okay, so that will be 24 questions. Okay, so thank you and keep learning.